Hello students, in the series of disk scheduling algorithms, our next algorithm is scan algorithm, and this algorithm is also called elevator algorithm because its working is just like an elevator. So before starting the working of the scan algorithm, uh, I will try to explain you with some real example. Suppose ये हमारे पास एक कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि काफी गंदा हुआ है। इस पे काफी सारा वो अपना वेस्ट जो भी है, वेस्ट मटेरियल्स सब यहीं पड़ा हुआ है। एंड नाउ सपोज स्वीपर का काम है इस प्लेटफॉर्म को साफ करना, ठीक है। नाउ स्वीपर इस साइड से स्टार्ट करता है सफाई करना, और वो सफाई करते हुए इस डायरेक्शन में जाता है, यहाँ तक आएगा। अब जब तक यहाँ से यहाँ तक वो पहुंचा होगा, तब तक इस एंड पे फिर से गंदगी इकट्ठा हो चुकी होगी, फिर से लोग आए होंगे अपना बिस्किट, नमकीन या जो भी होगा अपना सब डाल बोल के फिर से गंदगी कर दिए होंगे। स्वीपर क्या करेगा, फिर से अब इस साइड से स्टार्ट होगा, यहाँ से एक एक करके अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हुए इस एंड तक जाएगा। तो जब इस एंड तक पहुंचेगा तो फिर यहाँ तक अगेन यहाँ पर फिर से गंदगी इकट्ठा हो चुकी होगी। तो एक चीज यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो ये एंड है और जो ये एंड है, इस एंड को स्वीपर इस एंड से स्टार्ट हुआ था, दोबारा इस एंड पर आने पर सपोज इसको टी टाइम लगा, यानी आफ्टर टी टाइम इस एंड की दोबारा क्लियरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। बट जो प्लेटफॉर्म के मिड का एरिया है वो इस साइड से जाते हुए भी साफ हो गया था, इधर से लौटते हुए भी उसका क्लीनिंग हो गई थी। सो वी कैन से कि प्लेटफॉर्म का जो बीच का एरिया है वो ज्यादा क्लीन रहेगा रादर देन द एंड एरिया। तो मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि जैसे यहाँ पर फिक्स हो गया कि स्वीपर एक डायरेक्शन में जा रहा है और एक डायरेक्शन में एंड तक जाके क्लीनिंग की, अब उस एंड में जो जो आता रहेगा उस सबको क्लीनिंग कर देगा। लेकिन सपोज स्वीपर ने स्टार्ट किया जैसे यहाँ तक पहुंचा, अब अगर पीछे उसके कोई गंदगी होती है तो वो पीछे नहीं जाएगा, वो आगे ही उसी डायरेक्शन में जाएगा और सफाई करता हुआ जब वापस लौट के आएगा तब उस डायरेक्शन में सफाई करेगा। तो in the same way our scan algorithm works. Basically what happens in the scan algorithm, head traverse in one direction and provide the services to all the pending requests. Then after reaching the boundary of the direction of head will be reversed and he starts servicing in the other direction. Like I have already mentioned in the sweepers example, suppose we apply our example here. Sweeper starts from this point and starts cleaning process moving towards one end. After reaching the end, he direction just reverse and start cleaning to the another direction till he reaches the other end. When he reaches the other end, his direction again will be reversed and this process will continue and so on. So now just come to our algorithm. In scan algorithm, what will happen? Go from the outside to the inside, servicing request, and then back from the outside to the inside, servicing request. And we can say basically it's a variance of SSTF algorithm. This definition can be clearly understand in this.
In scan algorithm, the disk arm moves into a particular direction. Like you can see in scan algorithm, the disk arm moves into a particular direction and services the request coming in its path. And after reaching the end of the disk, it reverses its direction and again servicing the request arriving in its path. सो बेसिकली क्या हो रहा है, हेड अपनी जो करंट पोजीशन है वहां से एक एंड की तरफ जाएगा और जितने भी रिक्वेस्ट हैं सबको सर्विस देता जाएगा। जैसे ही वो एंड पे पहुंचेगा उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी एंड फिर वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा और जब जितनी भी पेंडिंग रिक्वेस्ट होगी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस एल्गोरिथम वर्क्स एज एन एलिवेटर and hence also known as elevator algorithm. And that I have already covered. जो प्लेटफॉर्म का बीच का एरिया था, that was more clean rather than the end positions or the end of the platforms. So as a result, the requests at the mid range are serviced more and those arrived behind the disk arm will have to wait. These are the few advantages of this algorithm: high throughput, low variance of response time, average response time. Uh, this is the disadvantage: long waiting time for request for locations just visited by this car. As I have already covered, इस भाई स्वीपर अगर जा रहा है तो उसकी फ्रंट उसी की डायरेक्शन में जो रिक्वेस्ट आएगी वो तो तुरंत सर्विस हो जाएगी, बट उसके जो पीछे सर्विस आएगी उसके लिए उसको वेट करना पड़ेगा जब तक स्वीपर लौट के उस डायरेक्शन में नहीं आएगा। सिमिलरली डिस्क आर्म जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में जो पेंडिंग रिक्वेस्ट आएंगी उनको सर्विस मिलती रहेगी, जो उसके जस्ट पीछे आ रही है जब उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी इन then only that pending request will be serviced. So let's come to an example for this. Again, we have the same question that we have used in FCFS and SSTF. Suppose, again I'm repeating the question one more time. We have total 200 cylinders from 0 to 199 and the current head position is 100 and these are our pending request. So what will happen? The very first question is, in which direction head will traverse first? So basically in some question it is mentioned via some twist language. In some question it is not mentioned. So it's all up to us. Our head is move in which direction. बट जनरली कोशिश ये करते हैं इस ऐसी डायरेक्शन में मूव कराते हैं जिसमें मूव कराने से मैक्सिमम रिक्वेस्ट हमारी कवर हो जाए। ऐसा कोई स्टैंडर्ड कहीं किसी बुक में लिखा तक नहीं मिला अभी तक। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा कोई स्टेटमेंट है जिससे क्लियर हो जाए कि हेड किस डायरेक्शन में मूव करेगा देन फाइन। अगर मेंशन नहीं है देन जनरली वी विल ट्राई टू move the head in the direction by which we can cover maximum pending request. Okay, so suppose in this question our head is at 100 and our head is moving towards the direction of 0th end. So what will happen? First of all, head will move from 100 to 89, then from 89 to 42, then 42 to 23. Now after 23 there is no pending request, but the direction of the head will be reversed only when it will hit the boundary in case of scan algorithm. Make note it, यही डिफरेंस है स्कैन में और आगे एक दो एल्गोरिथम जो आएंगे उनमें। हेड की डायरेक्शन रिवर्स तभी होगी जब वो बाउंड्री को हिट करेगा। तो इस केस में होगा क्या, इतना एक्स्ट्रा हेड मूवमेंट उसको
ट्रेवल करना पड़ेगा। ये इसका ड्रॉबैक भी है कि भाई जब 23 के बाद, भाई देखो ये हमारी पेंडिंग रिक्वेस्ट है, 23 के बाद जब इस डायरेक्शन में कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट ही नहीं है तो हम 23 से 0 इतना आगे ट्रेवल क्यों किए, है ना। But in case of scan algorithm, the direction of head will be reversed only when it will hit the boundary. So 23 से 0 अपने बाउंड्री को जैसे हिट किया है, डायरेक्शन हेड की रिवर्स हो गई। फ्रॉम now he will move to the other direction from 0 to next service is 132, then from 132 187. So again the question will be the total number of head movement. We can easily calculate from 100 to 89 11, 89 to 42 47, 42 to 23 19, 23 to 0 23, 0 to 132 132, and 132 to 87 55. Or directly we can calculate from 0 to, sorry, from 100 to 0 and from 0 to 187. So 100 plus 187 287. So in this way we can calculate the total head movement in case of scan algorithm. Okay, now let's see one more example. Suppose in this question our head is at location number 53 and these are the pending requests. In this question our head is moving towards the 0th boundary. Sorry for interrupt, there are some technical reasons. So I'm starting again. Currently head is at 53 and these are the pending requests. So as far as scan algorithm is concerned, what will happen? Head will move from 53 to 37. Now after 37, head again will traverse to 14. Now after reaching the 14, there is no pending request from 14 to 0, but he will traverse, yeah, we can say he will traverse extra head movement from 14 to 0. Now as he hit the boundary 0, the direction of head will be reversed and he starts servicing in the next direction. So first of all he gives the service to the 65, then after that 67, then 98, then 122, then 124, then 183. This is the last request. So we can then after that we can calculate the total head movement. So what will be the total head movement in this case? The 53 minus 0 plus 187, 183 minus 0. So these are the total head movements in case of the scan disk scheduling algorithm. Thank you.